Wait, I'm sharing again. Abhi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Oh, बाप रे, मेरा हाफ एन आवर तो ऐसे ही गया. शिश. ठीक है. Anyway, so So we have seen last time classification of a instruction set. So it is based upon three different ways. First is addressing mode. We have seen the addressing modes. Today we will see word length. Okay, so addressing mode is done. Now I will start with the next type of instructions which needs to be performed, which is classified based upon the word length. Now what do you mean by word length? Word length means an instruction will occupy how many memory locations in the main program. Okay, so word length का मतलब है any given instruction in the program is going to occupy how many memory locations in the machine code, or you can say opcodes. How many memory location का मतलब है each memory location now over here, each memory location is having capacity to store 1 byte. Each memory location can store 1 byte. So with respect to that, a instruction will occupy how many memory locations? How? Whether it will occupy 1 byte, whether it will occupy 2 byte, whether it will occupy 3 byte, उसके हिसाब से instructions classify होंगे, and this can be one of the characteristic of the instruction. So based upon this particular feature, we have three different ways of classifying. We can have 1 byte instructions. Then we can have 2 byte instruction. Okay. Similarly, we can have 3 byte instructions. So what does exactly this means? Let's see in detail. Okay. So as the name says, 1 byte will occupy 1 byte of memory location in the given program. 2 bytes will occupy 2 bytes of the memory location in the given program. And 3 bytes will occupy 3 bytes of the given memory location for that particular instruction. So 1 byte will occupy 1 byte of memory location. So for example, so this occupies, it occupies 1 memory location in the machine code. 1 memory location means 1 byte. ठीक है? So example है इसका, for example, if I write an instruction as move A, B. Okay, move A, B. Then move A, B is just having 1 hex code. Okay, it is just having a single hex code. मैंने यहाँ पे डेटा शीट नहीं डाला है ना. Just check out this. See here in this. You're able to see the instruction sheet, all of you. Yes, ma'am.
मिनट। यहाँ पे देखो, move a comma b. Where is move a comma b? It's over here. Okay, I'm putting a highlighter over here. What is the hex code of it? What is the hex code of it? 78. 78. Okay. So when we write this particular instruction in the program, we write it as 78. Single byte. ये एक example हुआ. Second example, let's say I'm writing an instruction as add b. Add b will also occupy add b will also occupy 1 byte of hex code. See where is add b? Here. Right? What is the hex code of add b? 80. 80. So I will write it down over here as 80. So whenever I write these instructions, they will occupy only single byte of memory location. From the instruction chart, how are we gonna identify that which instruction is 1 byte instruction or 2 byte हाँ, instruction? वो मैं hint बताऊंगी तुम्हें after I complete explanation. It's very simple and logical also. मैं बताती हूँ. Hints दूंगी मैं. जैसे एड्रेसिंग मोड के लिए हिंट दिया था, वैसे इसके लिए भी मैं हिंट दूंगी. Okay. So these are classified as 1 byte instruction. वैसे अगर कोई इंस्ट्रक्शन तुमने लिखा RRC which doesn't have any operand, तो RRC का हेक्स कोड देखो क्या है. RRC इधर. What is it? 0F. 0F. So we will write it down over here as 0F. So ये single byte instructions हुए. So now let's go for what are 2 byte instructions. The 2 byte instruction, it occupy 2 bytes. That is 2 memory locations in machine code. For example, let's take an instruction as MVI A, 56H. Actually, the instruction is MVI A, 8-bit data. 8-bit data का मतलब है वो 8-bit data कुछ भी हो सकता है. So the minimum 8-bit data existing is 00. Maximum 8-bit data existing is FF. So it can be any one of the data between that. So this will occupy 2 bytes of memory location. Okay. First will go the hex code of MVI. Please, all of you pay attention. This is all very important. First will go the hex code of MVI. Now search for hex code of MVI. Where is it? MVI A. What is it? MVI A, 8-bit data. 3E. 3E. ठीक है? So here you will write it down as 3E. Then it is the data what is going to get copied into accumulator or register A. So 56 will come over here. That is how this becomes a 2-byte instruction. MVI A, 56 becomes a 2-byte instruction. Because you are sending the data via program. Did you understand? No मैम एक बार वापस बता देना. See, MVI A, 56H. ये 56 तुम वाया प्रोग्राम दे रहे हो. ये 56 की जगह पे कुछ भी हो सकता था. मैं MVI A, 04H भी लिख सकती थी. That depends upon what is the aim of your program and what you want to work upon the program. यहाँ पे तुम externally data registers में दे रहे हो.
You're giving the data externally into the given registers. And that's why they go via program. So when they go via program, this is the way how it goes via program. If it is MVI A, 8-bit data, first is the hex code of MVI, what will get entered in the machine code. And second is the data what will get entered, which is to be copied into accumulators. So that is how 56 will enter into A when this instruction is executed. Did you understand now? Yes, ma'am. Similarly, if I write ADI 01H, means add immediate 01H to accumulator. So this will also comprise of 2 bytes. First byte is the hex code of ADI. Go and search for ADI now. Where is ADI? ADI, this ADI, ADI 8-bit data. What is the hex code? C6. Okay, C6. So here you will write down C6. Then what is the value you want to get added with respect to accumulator 01? So that will come over here. So the data which is to be processed will go after the hex code. Did you get it? All of you? Yes, ma'am. Now 3-byte instruction. Now it occupies 3 bytes. That is 3 memory locations in machine code. ठीक है? For example, so let's write an instruction as STA F200H. So when we write STA F200H, this is the 3-byte instruction. Okay, so first hex code of STA will come. So first search where is STA. Where is STA? Here. MVI, sorry, STA 16-bit data. What is the hex code? 32. The first hex code of STA will come 32, and then it is this address which will come over here as the next 2 bytes. So whenever address goes into the program, the common method, this is universal for whole 885 programming. The common method is first lower byte of the address goes, then upper byte of the address goes. So in F200H, 00 is the lower byte, F2 is the upper byte. So first 00 will go, then F2 will go. That is how this becomes a 3-byte instruction. So major difference between 2-byte and 3-byte is in 2-byte mainly data enters, 8-bit data enters after the hex code. And in 3-byte instruction, the address enters into the hex code after the given option. Did you मैम ये understand? F200H वाला वापस बताना, वो नहीं समझा मैं। वो 00 पहले क्यों आया वहां से? वो ऐसा पैटर्न है, जब भी तुम एड्रेस सेंड कर रहे हो मशीन कोड में, तो फर्स्ट लोअर बाइट गेट सेंडेड। F200 में F2, ये जो F2 है ये लोअर बाइट है, सॉरी 00 इज द लोअर बाइट, F2 इज द अपर बाइट। लोअर बाइट अपर बाइट समझता है ना कि नहीं समझता है मैं क्या बोल रही हूँ? कि when you see your address, suppose say here you are seeing the address, this is your address, हाँ, तो ये एड्रेस 16-bit एड्रेस है, so it will come on the 16 address lines.
So A15 to A8 इस पे ये अपर बाइट ऑफ एड्रेस है। और फिर नेक्स्ट आता है AD7 ना, या फिर A7 लिखो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। A7 to A0. This is lower byte of address. So this is upper byte of address. बाइट यानी कि 8 बिट डेटा। तो अपर बाइट यानी कि जिस जहां पे तुम्हारा MSB पोजीशन है। लोअर बाइट यानी कि where your LSB position is there. Most significant bit and least significant bit. So on these lines, the data will get uploaded. F2 बाइनरी में, और 00 का 0 0. So this becomes upper byte address, this becomes lower byte address. So whenever address is getting entered into the machine code, it is always first lower byte goes and then upper byte goes. So here, when we write instruction STF2008, when this address is to be sent into the program, first hex code of STA will come 32, then lower byte will come, and then upper byte. Understood now? मैम मतलब हर प्रोग्राम में अपना LSB वाला पहले जाएगा, फिर अपना ये जाएगा MSB वाला। यस, हर किसी चीज में जब भी एड्रेस, ये याद रखो, अभी ना हर बार अलग अलग लॉजिक रहेगा। जब भी प्रोग्राम लिखते समय हम लोग लूपिंग स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, तभी भी एड्रेसेस एक्सेस होने वाले हैं। पर ये बात दिमाग में फिक्स बैठाना कि whenever address is going to be sent via program or whenever address is uploaded in the program, that time that address name first lower byte comes, then upper byte comes. I am talking specifically about machine code. Machine code यानी कि तुम्हारा program code which is going to get executed. So this is fixed. This is the pattern. See, जैसे कि why that upper byte is going and why upper byte is going later and why lower byte is going first. This particular thing is associated with the mechanical working of the microprocessor. Okay, that much all thing detail is not there because मुझे फिर और एक पूरा पता है, एक नया सेटअप तुम्हें बताना पड़ेगा जो है ही नहीं तुम्हें, तो उतना सबका जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम अभी फिलहाल ऐसे ही याद रखो, ये पैटर्न है। समझा कि नहीं समझा? समझा मैम, समझा। मैम एक बार उसका डेफिनेशन बताओ। किसका डेफिनेशन बताओ? वही अभी जो बोला आपने। ये डेफिनेशन नहीं है रे, ये एक ऐसा फीचर है जो तुम्हें याद रखना है। मैं लिखती हूँ कहाँ पे, तो यहाँ पे जगह ही नहीं है। So whenever address is sent or loaded into the machine code or opcodes of program, always first lower byte of address is uploaded first, then the upper byte of address.
ठीक है। नाउ अभी हिंट्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इन इंस्ट्रक्शन को देख के, लेट्स सी। ये हिंट्स तुम्हें सब याद रखने हैं, क्योंकि जब भी मैं शुरू करूंगी इंस्ट्रक्शन सेट तो तुम्हें ये पता होने चाहिए। तो इसका हिंट है 1 बाइट 2 बाइट का। ऑपरेंड्स में ऑपरेंड्स विल हैव रजिस्टर पेयर नेम्स, ओके, और नो ऑपरेंड। ये हिंट है। so whenever operands are having रजिस्टर के नाम ए कमा बी, बी कमा सी, या फिर बी सी, या फिर ऑपरेंड ही नहीं है, तभी वो सारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस है। ओके, 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस में operand has 8-bit data. So whenever operand has 8-bit data, it becomes 2 byte instruction. And 3 byte instruction में whenever operand is having 16-bit address or data. So whenever operand is having 16-bit address or data, that time it will be classified as 3 byte. तो इतना ये सिंपल है याद रखने के लिए, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो whenever operand में रजिस्टर के नाम है ए बी सी डी ई एच एल, या फिर रजिस्टर पेयर्स के नाम है, या फिर नो ऑपरेंड, दैट टाइम दे ऑल आर क्लासिफाइड एज 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस। 2 बाइट में whenever operand will have a 8-bit data which is to be processed via program, that time it will be classified as 2 byte instruction. And in 3 byte, whenever address appears in the operand or a 16-bit data appears in the operand, that time it will be identified as a 3 byte instruction. और ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज वेन यू राइट प्रोग्राम यू हैव टू नो वेदर द गिवन इंस्ट्रक्शन इज 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, तभी ही तुम सही तरीके से मशीन कोड लिख पाओगे। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? मैम 1 बाइट वाला एक बार और समझाना। 1 बाइट में रजिस्टर्स के नाम आएंगे ऑपरेंड में, जैसे यहाँ पे लिखे है ना ए कॉमा बी, या फिर रजिस्टर पेयर्स के नाम, जैसे कि अगर मैं बीसी रजिस्टर पेयर यूज कर रही हूँ तो मैं सिर्फ बी यूज करती हूँ ऑपरेंड में, वो मैं डिटेल में बताऊंगी आगे। अगर डी रजिस्टर पेयर यूज हो रहा है तो डी ही यूज होता है लिखते समय। अगर एच एल रजिस्टर पेयर यूज हो रहा है तो एच ही लिखा जाता है। तो आइदर रजिस्टर्स के नाम होते हैं या रजिस्टर पेयर के नाम होते हैं, या फिर ऑपरेंड ही नहीं होता, जैसे कि आरआरसी इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड ही नहीं है because it is specifically performed on accumulator. So it is having a predetermined operation. So as it is having a predetermined operation, we don't need to specify any operand. मैम बाद में एक बार वो रजिस्टर एफ के बारे में भी बताना। हाँ बताओ। वो मैम इसमें आया था एफ टेस्ट इसमें नहीं आएगा। टेस्ट में अच्छा, आया था ना टेस्ट मैम। में आया था, तुम लोग नहीं कर पाए इतना इजी चीज। कौन सा मैम वाला याद नहीं ही नहीं कर आ रहा था। 2 क्वेश्चन था उसमें मैम। सॉल्व करने का है मैंने। हाँ सॉल्व करूं मैं? नो मैम, एक बार खाली बता दो रजिस्टर एफ के बारे में बस हो जाएगा। ठीक है बता दो। पेपर कैसे था? इजी था मैम, अच्छा था। ओके ओके, तो ये अपना हो गया बेसिक्स। शैल आई स्टार्ट विद इंस्ट्रक्शन से ऑल ऑफ यू? यस मैम। So 885 instruction sets. So I am going to start with group A instruction, which are data transfer instructions. 5 groups है A, B, C, D, E. Group A are data transfer instructions. Group B are means अभी हमने 2 टाइप के क्लासिफिकेशन देखी, अभी ये 3rd टाइप का क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन ऑपरेशन परफॉर्म। तो मैं जब ये समझा रही हूँ तभी मैं ऑपरेशन
कैसे है उसी तरह से क्लासिफिकेशन करके समझाऊंगी. So I will take one group at a time. So group A में all instructions are data transfer instructions. Group B is arithmetic instructions. Group C is logical instructions. Group D is branching instructions. And Group E is machine control instructions. So that is how the instructions will get classified. Okay. So 8085 instruction set, Group A data transfer instructions. हाँ. अभी instruction set, this is your instruction set. इसमें सारे instructions हैं. बट जैसे हम इंस्ट्रक्शन सेट के शुरुआत करेंगे तो हमें कुछ उसके बारे में बेसिक्स याद रखना पड़ेगा. वी हैव टू रिमेम्बर सर्टन बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ दोज पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस. हाँ, तो अभी क्या क्या बेसिक्स याद रखना है वो बताती हूँ मैं. क्या क्या तुम्हें इंस्ट्रक्शंस याद रखना है वो बताती हूँ. सो 2 मिनट. जस्ट 2 मिनट. टू मिनट्स पीपल. मेरा रेफरेंस बुक किधर गया? 2 मिनट्स. Yes, I got it. So, first of all, we need to remember few basics. So, let's first understand before starting with the instructions. अभी basics तो already मैंने कर दिए. ये basic नहीं है. ये क्या है? तुम्हें अलग-अलग notations याद रखने हैं. So, remember these. You can say they are valid shortcuts or short forms or abbreviations. So, notations to be remembered. So, in that first is whenever R is there in the operand, R is like a variable, R is there in the operand, R will identify any one of these registers. So either it can be A register, B register, C, D, E, H, L. इनमें से कोई भी हो सकता है. तो जब भी ऑपरेंड में R is specified,
R is like a variable. जैसे हम लोग linear equations लिखते हैं, हाँ, 2x plus b, 2x plus 3, something like that. F of x is 2x plus 3. तो यहाँ पे ये x variable हो गया. क्यों variable हो गया? Because the way you change the value of x, the function value is going to change. In the same way, here this R is variable. Okay, that variable can be any one of these registers. It can be either A, B, C, D, E, H. ठीक है? Second, register pair if RP is there in the operand. Understood first point now, all of you? मैम आपने डी नहीं लिखा है वहाँ पे। D हाँ नहीं लिखा. मैंने एच लिखा है 2 बार। अच्छा अच्छा, सॉरी. So RP is there. तो RP का मतलब है रजिस्टर पेयर. तो ये एक एक्सटेंडेड 16 बिट रजिस्टर पेयर हो जाता है. ठीक है? तो here, so whenever B is written in the operand, तो operand में अगर B लिखा है तो उसका मतलब है BC रजिस्टर पेयर इज यूज. ओपरैंड में अगर D लिखा है तो उसका मतलब है DE रजिस्टर पेयर इज यूज. एंड H लिखा है तो इट मींस HL रजिस्टर पेयर इज यूज. But whenever register pairs will be used, you will find one more thing. The one more important note over here is mnemonics will have X. Mnemonics will have X because X stands for extended register pairs. तो अगर निमोनिक में X है और ओपरेंड में B आया, उसका मतलब है BC रजिस्टर पेयर यूज हो रहा है. अगर निमोनिक में X है और ओपरेंड में D आया तो उसका मतलब है D रजिस्टर पेयर इज यूज्ड. अगर निमोनिक में X है एंड ओपरेंड में H आया तो उसका मतलब है extended HL register pair is used. Did you understand? यस मैम अंडरस्टूड। Ma'am, can you repeat this part? निमोनिक और ओपरेंड क्या है पता है तुमको? यस मैम। ऑपरेंड मतलब जिसपे ऑपरेशंस होता है और न्यूमोनिक्स मतलब No, इंस्ट्रक्शंस। someone asked me to repeat. हाँ, वो कौन है? हाँ, वो निमोनिक और ओपरेंड पता है? Yes, ma'am. क्या है निमोनिक? क्या है? What is mnemonic? Short form of something like. हाँ हाँ. तो जैसे अगर मैं लिखती हूँ इंस्ट्रक्शन LXI H, F200H, इसका मतलब है लोड एक्सटेंडेड रजिस्टर पेयर HL immediately with address F200H. So on execution of this instruction, HL gets uploaded with address F200. तो यहाँ पे this is your mnemonic. And this becomes your operand. तो यहाँ पे operand में L स्पेसिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, बट निमोनिक्स में X आया है. So it means that extended HL register pair is used, and that's why F200 is getting loaded into HL register pair. Did you understand now? Yes, ma'am. हाँ, समझा? Yes. So that is what it is. If mnemonic में X है और वही इंस्ट्रक्शन के operand में B आया, that means BC is used. D आया, that means D used. H आया, that means HL is used. Like that.
Okay, next. If M appears in the operand, okay, it means memory pointer data is getting accessed. Via HL register pair. Because M stands for memory pointer. What is memory pointer? It is that data whose address is there in the HL register pair. So you have to remember this. Then whenever any operand is not present, means instructions which do not have any operand. Instructions which do not have any operand. Huh? So whenever any operand is not present, means that instruction operation is predetermined. हमें स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं कि ऑपरेशन कहाँ पे करना है. तो अगर ऑपरेंड नहीं है तो माइक्रोप्रोसेसर को ऑलरेडी पता है कि ये ऑपरेशन यहाँ पे ही परफॉर्म होगा. ऐसा. तो ये अभी तक के जो मुझे याद आ रहे हो, इसके अलावा तो मुझे कुछ याद नहीं है. If I remember, then I will go on adding on into this only. ठीक है. So let's continue. So this is how the instruction set will start. स्क्रीनशॉट लेना था इसके पहले वाला. क्यों मैं ये डालूंगी ना, अपलोड करूंगी मैं ये चीज पूरा का पूरा. उसके लिए तो लिख रही हूँ बराबर से. आई एम गोइंग टू पुट एवरीथिंग. बेसिक भी डालने वाली हूँ, ये भी डालने वाली हूँ. स्क्रीनशॉट मत लो. ओके. ठीक है. तो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट विथ ए डेटा ट्रांसफर ग्रुप. हाँ. तो इन डेटा ट्रांसफर ग्रुप वी हैव टोटल 13 instructions. ठीक है. All the instructions are going to perform data transfer operations. हाँ. अभी ये जंक्शन पे मैं तुम्हें एक क्या बोलते हैं एडवाइस दूंगी. इट्स माय एडवाइस. The one who follows my advice will become pro in 885 programming. The one who doesn't follow my advice, you know what will happen to you at the end of the day to give theory and practical papers. Okay. And वो भी अभी तुम्हें पता है कि वो ऑफलाइन होने वाला है, राइट? तो टिक टिक यस टिक तो मैम, नहीं. एग्जाम डेट्स पे आ गए. हाँ हाँ. तो टिक 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 तो नहीं करना है. अभी लिखना है ना उधर कुछ. अभी जैसे मैंने तुमको पूछा कि अभी तो ये कैसे था, 885 का क्लास टेस्ट कैसे था, तो तुमने बोला अच्छा था, इजी था. क्यों? बिकॉज सब अवेलेबल था ना सामने. तुम्हें लॉजिकली उसको चूज करना था. हाँ. बड़ी मीन्स लॉजिकली समझना आया. सो दैट्स फाइन. ठीक है. वो मैं समझाने ही वाली हूँ. दैट आई विल मेक बाय हुक और क्रूक. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. अभी क्या है, अभी लॉजिकली समझना भी है और उसको लर्न करना है एक सर्टन वे में. तो अभी टास्क एडअप हो गया है. तो तुम जितना जो भी इंस्ट्रक्शंस बता रही उतना तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें ही आसानी होगी. जैसे कि अगर मैं आज डेटा ट्रांसफर के सारे इंस्ट्रक्शंस खत्म करती हूँ 13 के 13, तो प्लीज सी टू इट दैट यू मेक इट अ पॉइंट यू फिनिश स्टडिंग इट ऑन दैट डे इटसेल्फ. बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट विद प्रोग्राम यू नीड टू नो ऑल 73 इंस्ट्रक्शंस. ऐसे नहीं हो सकता है कि हाँ कुछ इंस्ट्रक्शन पता है, चलो चलो मैं इसके साथ निपटा दूंगा प्रोग्रामिंग 885 का. ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है. So if I'm finishing whatever instructions I'm finishing today, 4 instructions, 5 instructions, 10, 20, make it a point. Please find time for yourself, evening may 1 hour, 2 hour, and finish it off on that day itself.
Is that clear all of you? बिकॉज अगर इंस्ट्रक्शन सेट पता है तो तुम पूरा चारों यूनिट्स लिख सकते हो. ये मैं इतना लिख के देती हूँ, एटलीस्ट 3 यूनिट्स, 2, 3 and 4 इंस्ट्रक्शन सेट पता है तो इट इज लाइक दैट. ओके, सो now whenever we talk about instructions, we will talk about them for these 6 different points. Okay, so first is we will see what is format of the instruction. Second is what addressing mode the instruction is having. Group will be obviously data transfer group, because we're talking about data transfer operation. So all instructions over here will be data transfer group instruction. Then we will see how many bytes they are occupying, whether the flag changes happen when that instruction is executed or not, and comment means an example of that instruction. Key, what happens on execution of that instruction by considering some data. Okay? So quickly starting with the first instruction in this is move RD, RS. So your RD stands for destination register, and RS will stand for source register. Okay, move RD, RS. So what does this mean? So RD stands for destination register, RS stands for source register. Here I remembered one point. So whenever we write square bracket of, it means content of that register. Data content of that register. Square bracket का मतलब है data content. हाँ? तो फॉर्मेट का मैम प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या है? पहले से ही माइक्रो प्रोसेसर को पता है. ओके मैम. पहले से ही पता है, जैसे कि यहाँ पे इधर क्या बताऊं मैं, अभी तुम मूव ए कॉमा बी लिखते हो तो माइक्रो प्रोसेसर को नहीं पता है. व्हेन इट कम्स अक्रॉस मूव हेक्स कोड, इट जस्ट नोस दैट इट इज नाउ गोइंग टू प्रोसेस अ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन. फिर उसके बाद में मूव ए कॉमा बी का हेक्स कोड लिखते हो तो मूव का मतलब डेटा ट्रांसफर, ए कॉमा बी यानी कि बी टू ए कॉपी करना है. तो ये हमने दिया है उसको. ये चेंज भी हो सकता था, बिकॉज अभी ये जो मूव ए कॉमा बी है, ये मूव आरडी कॉमा आरएस का एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है, जहां पे आरडी कॉमा आरएस वेरिएबल्स है. अभी मैंने उसमें वैल्यूज डाला ए और बी, तो मेरा डेस्टिनेशन रजिस्टर ए हो गया, सोर्स रजिस्टर बी हो गया, तो बी का डेटा मैं ए में कॉपी करूंगी. तो ये हम दे रहे, यूजर दे रहे, तो ये प्री डिटरमाइंड ऑपरेशन नहीं था. बट अगर मैं आरआरसी लिख रही हूँ तो आई एम नॉट गिविंग एनी ऑपरेंड ओवर हियर. So in that case, microprocessor knows that मुझे rotate operation accumulator पे ही perform करना है. That's why it becomes a predetermined operation. अंडरस्टूड मैम. ओके. Understood? Okay. So here, quickly starting with content of RS, data content of RS is copied to RD. That is format of it. Addressing mode अभी तुम लोग बताओ मुझे. Addressing mode क्या आएगा इसका? अभी ये RD, RS के ना काफी सारे ऑपरेशंस होंगे. यहाँ पे देखो, ये सारे RD, RS है. ये यहाँ से मूव ए कॉमा ए, बी ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, ए कॉमा एच, ए कॉमा एल, एम, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई, बी कॉमा एच, बी कॉमा एल, ये सारे जो मूव ऑपरेशन है यहाँ तक, these all are similar instructions of move RD, RS. Move RD, RS is the main instruction. ये उसके सब टाइप्स है. सब टाइप्स का मतलब है जब भी तुम RD और RS में वैल्यूज डाल देते हो तो तुम्हें इतने सारे ऑपरेशंस मिलते हैं, इतने सारे वैरायटी ऑफ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस मिलते हैं. Did you understand all of you?
समझा क्या स्टूडेंट्स कि नहीं समझा? नहीं समझा रहेगा तो पूछो प्लीज। नहीं समझा मैम। नहीं समझा? सी यहाँ पे आरडी और आरएस ना ये अच्छा मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम C++ में तुम एडिशन ऑफ टू नंबर्स का मान लो प्रोग्राम लिख रहे हो, तो तुमने void मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर किए टू वेरिएबल्स int a, b, c, जहां पे a और b में तुम वैल्यूज लेने वाले हो, तो यू से सी आउट एंटर टू नंबर्स एंड यू एक्सेप्ट दैट नंबर्स एज a and b। तो ये a and b किसके लिए है? कंपाइलर के लिए है ना, यूजर के लिए नहीं है ना। यूजर को नहीं पता है कि क्या वेरिएबल्स आइडेंटिफाई हुए हैं, बराबर ना। यस मैम। फिर जो भी यूजर डालेगा वो मेमोरी में ए और बी में स्टोर हो जाएगा, whatever data gets uploaded by the user when the program is getting executed। और फिर आंसर इज सी, ए प्लस बी। तो ए और बी कंटेंट ऐड होके सी मेमोरी लोकेशन जहां पे डिजिग्नेट हुआ है वहां पे स्टोर हो जाएगा। ये यूजर अभी अगर हम लोग अभी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ही यूजर है और हम ही प्रोग्रामर है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है। बट देयर कैन बी सो मेनी एप्लीकेशंस वेयर वी डोंट नो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बिहाइंड इट, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट एप्लीकेशन। जैसे कि अभी ये एप्स है, ऑनलाइन एप्स है, तो कितने सारे एप्स है उनका कोड हमें पता नहीं है। जैसे अभी ए 885 स्टिमुलेटर भी है, वो भी किसी ने बनाया है, उसका प्रोग्राम लिखा है, तो वो हमें पता नहीं है उसने किस तरह से लिखा है, बट हम उसे यूज करते हैं, तो उसमें वेरिएबल दिए जाते हैं। तो उसी तरह से एक्चुअल इंस्ट्रक्शन इज मूव आरडी कॉमा आरएस, बट नाउ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द logical necessity of the user or the programmer, he can use this instruction in any way. He can use it as move a comma b, move a comma c, a comma d, a comma e, a comma h, a comma l, या फिर if he wants he can use that as move b comma a, b comma c, b comma d, b comma e, b comma h, b comma l, या फिर move c comma a, c comma b, c comma c। समझा क्या मैं क्या बोल रही हूँ? दैट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हें प्रोग्राम में लॉजिकली क्या परफॉर्म करना है, तुम्हें किस तरीके का डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन करना है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर। दैट्स व्हाई सो मेनी वैरायटीज ऑफ ऑपरेशंस आर अवेलेबल फॉर वन सिंगल ऑपरेशन। समझा? समझा कि नहीं समझा अभी भी किसी को? तो यहाँ पे आरडी और आरएस चेंज हो सकते हैं, बट वो जो पैटर्न है डेटा ट्रांसफर का वो कॉमन रहेगा। इट इज फ्रॉम सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। Addressing mode will be what? Now in these instruction, all these instruction, the operand में what is available? Registers, no? Register names are available. So addressing mode is register addressing mode because the operation is happening between the registers. Okay, number of bytes required will be 1. Why 1? Because in the operand we have only register name. We do not have a 8-bit data or a 16-bit address. So it is just a 1 byte instruction. And no flag will change. There will be no change in flag for data transfer group. तो अभी जो हम first 13 operations कर रहे हैं under this category of data transfer group, there will be no flag changes for any one of these instructions. Why? Because they just transfer the data. They do not process the data. तो flag change कभी आते हैं? डेटा प्रोसेसिंग में, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस में फ्लैग चेंजेस होंगे बिकॉज वो प्रॉपर प्रोसेसिंग है। ट्रांसफर में फ्लैग चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब मैम हर अरिथमेटिक ऑपरेशन में फ्लैग चेंज होंगे? यस यस, उसमें अलग अलग वेज है, वो मैं बताऊंगी तुम्हें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। So for example, register D is having 45H. H stands for hex value, remember,
H means hex value. And register E is having F8H, and we give an instruction as move D comma E. Move D comma E. So this what I have written is before execution. BE stands for before execution. ये valid short forms है. AE stands for after execution. So after execution of this instruction क्या आएगा? So after execution of this instruction, D will become what? F8H. And E will remain what? F8H. There will be no change in data content of E because it is a copy paste operation which will take place for data transfer group. सिर्फ और सिर्फ copy paste होता है. Is everybody clear? First instruction. Yes, ma'am. Ma'am, Then can you please will explain again? हाँ Can you please explain the after execution part again? हाँ ये instruction क्या है? Oh, Move move D D to comma E. So what is D? D is 45. What is D? Destination ए क्या एको क्यों हो रहा है? तुमने दो डिवाइसेस पे लॉगिन किया है. एक का आवाज बंद करो. D is destination register. RS is source register. So move D comma E में this is your destination register. This is your source register. So data content of E will get copied to D. So E is what? F8H. So that F8H will get copied to D also. So after execution, D becomes F8H. So 45 will get erased. Instead of 45, we will have F8H. And E will remain E will remain F8H. So D becomes F8, E becomes F8. Is this clear? Yes, ma'am. Second instruction is move R comma M. Move R comma M. Now, here, one more thing. So sixth point is M we always write as content of HL. Double square bracket of HL. Why? Because M is what? Memory pointer. तो मेमोरी पॉइंटर हमेशा ऐसे लिखा जाता है कंटेंट ऑफ HL. क्यों ऐसा? Now let's say in HL we have loaded the address F301H. तो मेमोरी पॉइंटर डेटा सपोज से फॉर एग्जांपल F301H में 15 है मेमोरी पॉइंटर डेटा. So HL is having address F300, memory pointer M is having data 15. So when I say content of content, इसका मतलब है पहले अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करो. हाँ, means this part. What is that? F301. So content of HL is only F301. Then solve the next part. Content of F301H was 15H. That nothing but becomes your memory pointer data. So whenever in the operand or format, whenever in the format you have double square bracket of HL, that time we are accessing memory pointer data. Okay. So here when we write
It will. Now here जब भी move आता है, move का मतलब है source से destination में copy करो. It's as simple as that. Copy paste operation. तो यहाँ पे memory pointer content will get copied to register. So memory pointer is what? Content of HL will get copied to register. Now here R can be any one of the register A, B, C, D, E, H, M. So like that we have how many instructions of this? कितने सारे instruction मिलेंगे? Move A, M, move B, M, move C, M, move D, M, move E, M, move H, M, move L, M. So many operations we can get for that. यहाँ पे R वेरी होगा, M हमेशा फिक्स्ड है, M का मतलब एक ही है, मेमोरी पॉइंटर डेटा. It is that data whose address is stored in HL register pair. Okay. So, what will be the addressing mode of this instruction? What is the addressing mode of this instruction? Memory. Register indirect. तुम लोग ना सब भूल गए हो, मैंने hints भी दिए हैं तुम लोग को, तुम अभी कुछ याद नहीं है तुम लोग को. Register indirect. Whenever it is a memory pointer operation, addressing mode is always register indirect. Why? Because to access memory pointer M, we have to first go to HL register pair. Go to HL, see the address in HL. Then go to that address, check the data in that address. तो वाया हो जाता है, जैसे कि अभी मैं समझाऊंगी यहाँ पे. It is 1 byte operation because there is no 8-bit data or 16-bit data in the operand. It is just register names and no flag changes. So for example, let's say before execution, we have data of C as 42H, HL address is, let's say, F500H, and address F500H is having content as 63H. यानी कि मेमोरी के F300 में, मेमोरी के F300 में कंटेंट इज 63. So if this is HL, this becomes F. ठीक है. So if I write an instruction as move C, M, it means memory pointer data will get copied to C. Okay. Now what is memory pointer data? To find memory pointer, first we need to go to HL. So we first go to HL. What is the data? F500. Okay, we read that. Now F500 address में क्या data है? 63. So we read that. So now this 63 will get copied to C register. So after execution, C will become 63H. Data of F500 will remain 63H because it is copy paste operation. Is this clear, all of you? Yes, ma'am, understood. मैम आपने वो बॉक्स में F300 क्यों लिखा है? अच्छा सॉरी वो F500. मैंने चश्मा नहीं पहना है क्योंकि वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है एंड आई एम कंटिन्यूइंग इन द सेम वे. सॉरी, किधर रखा है मिस जाने, कॉलेज में भूल गई क्या कल, वो भी याद नहीं आ रहा है मुझे. ओके, एनीवे, नेक्स्ट, कमिंग अप टू नेक्स्ट इज मूव M, R. इसका अपोजिट, यहाँ पे रजिस्टर कंटेंट विल गेट कॉपीड टू मेमोरी पॉइंटर. Register contents will get copied to memory pointer. So here content of register will get copied to content of HL. So here this instruction also addressing mode will be register indirect. Why? Because here M is appearing in the operand. That means it is an indirect way of addressing. To find M, first we have to go to HL, see what is the address in HL, then go to that address and find the data. So it becomes a via operation. Huh?
अभी शायद कुछ टाइम के बाद तुम्हें लगेगा कि ये मिस पागल हो गई है, वापस वापस वही रिपीट कर रही है, बट यू वेरी वेल नो दैट व्हाई आई एम आई रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. यू रिमेम्बर किंडरगार्टन क्लासेस ना, तुम्हारे केजी की क्लासेस पता है ना कैसे होते थे जूनियर सीनियर के. जैसे तुम जाते थे तो अल्फाबेट रिपीट होते थे, A to Z, 1 to 10. वही वही रोज नर्सरी रैंक रिपीट होते थे. वो क्यों रिपीट होते थे? ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए. तो मैं कुछ उसी तरह का फंडा फॉलो करती हूँ, वापस वापस रिपीट करूंगी तो शायद तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा. Number of bytes required over here will be also 1 because there is no 8-bit data or 16-bit data in the operand and no flag changes for data transfer. So let's take a similar example what we've taken over here. For example, before execution, register C is having 42H, HL is having address F500H, and address 0 F500 content is 63H. मैं वही ले रही हूँ later. But instruction, I'm going to execute the opposite of it. Move M, C. So after execution, what will be F500 content? Can anyone tell me? Yes, 42H. यहाँ पे C content is getting copied to memory pointer. So C content will get copied to the address stored in HL. HL में क्या address stored है? F500. So 42H comes in address and C remains 42H. Is this clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. So quickly moving on to next. 5 minutes का ब्रेक मिल सकता है. ब्रेक चाहिए, ठीक है. 2 minutes. थैंक यू मैम. Okay. Take a 5 minutes break and come back. क्या टाइम क्या हुआ है? Take a 10 minutes break and come back. हाँ, 10:10 से फिर 11:10 तक लूंगी मैं. 11:10 को छोड़ दूंगी. ठीक है. I have stopped Ma'am, thank you, recording. I ma'am. will start recording again. हाँ. लॉग्ड इन ही रहो बट ब्रेक लेके मैं एग्जैक्ट अभी कितना 2 मिनट. 2 मिनट. मेरे लैपटॉप पे कितना टाइम हुआ देखते हैं. इट इज 9:56. तो 10:05 को आ जाओ. 10:06 को. ओके. ओके.
Can I start back again? Yes, ma'am. मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था, किसने शुरू किया? नहीं, तुम लोग कोई शुरू नहीं कर सकते हो। आई डोंट नो, एनीवे ठीक है। Okay, so we have seen these three instructions. Going on to the next. Okay, fourth one. Fourth one is MVI R, 8-bit data. Okay, MVI R, 8-bit data. So format is whatever 8-bit data you are passing through the program. Just a moment. Whatever data you are passing via program will get uploaded in the specified register. Is copied in the specified register. Addressing mode will be immediate addressing mode. अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करना है? निमोनिक्स में आई आया है तो immediate addressing mode. Okay, group is, these are all data transfer operations only. Now who will tell me how many number of bytes are required? 1 byte, ma'am. 1 byte कि 2 bytes? 2 bytes. 2 bytes required है because operand में 8-bit data आया है and this data is only going to get entered into the program. So first byte will be the hex code of MVI instruction. Second byte will be the data what you are supposed to upload in that register, which will go via programs. Okay, so that is how it becomes a 2-byte instruction. No flag changes. So for example, let's take before execution of the instruction. Register B is having content 49H and we give an instruction as MVI B, F5H. Okay. So after execution of this instruction, content of B will become what? F5H. Because F5H will get uploaded in register B and 49 will get erased. Is this clear to all of you? 2 byte क्यों आया वो नहीं समझा बस. 2 byte इसके लिए आया because MVI का पहले हेक्स कोड लिखा जाएगा. यहाँ पे MVI का हेक्स कोड क्या है? 3E. जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया था, ये देखो MVI A, 56H. तो अगर मैं MVI A, 56H लिखती हूँ तो पहले हेक्स कोड ऑफ A जाएगा which is 3E. And then the data will go what you are supposed to upload in register A. So 56 will go. That is how it occupies 2 memory locations. तो अभी मैं इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ. किधर गया मेरा वो? Didn't get saved, I think so. Shit. Oh, I'm sorry. सेव नहीं हुआ वो. अच्छा हुआ है. हाँ,
So यहाँ पे अगर मैं MVI B, F5H, if I'm writing, then F5 will get uploaded in register B. So now what is hex code of MVI B over here? See, check out. Hex code of MVI B क्या है? 06. Right? So after 06, what will go? After 06, what will go? F5. Why? Because you have to upload that into register B. That is how it will occupy 2 memory locations. That means 2 bytes. That's why it becomes a 2-byte operation. You understand now? Yes, ma'am, understood. Next instruction is M, 8-bit data. So here the 8-bit data is going to get uploaded in content of HL. Memory pointer, that is. Huh? This is now you tell me this is which addressing? I want the answer from you. This is which addressing mode? ये जो मैंने लॉजिकल Indirect, ma'am. हिंट्स तुम्हें बताए हैं वो प्लीज तुम लोग सब याद करो. दिस इज व्हाट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बराबर है. Yes, व्हाई? ma'am. बिकॉज M, in ma'am. operand we have M, as well as it is immediate addressing mode because we are transferring the data externally via program. तो ये दोनों भी हो सकता है. तुम दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो. इट इज बोथ आर करेक्ट. ठीक है. तो निमोनिक्स में भी आया है तो इमीडिएट एड्रेसिंग. This is also 2-byte operation because the second byte will be the data what is getting transferred into the memory pointer. No flag change will happen. Now, for example, before execution, HL is having content F200H. And F200H is having content 43H, for example. And you give an instruction as MVI M, 98H. So after execution of this instruction, what will F200 address location have? Can anyone tell me? 98H. 98H. अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके? Yes, Are ma'am. you understanding all of you? Next, 6. 6th is very important because we will be using almost this in every program. LXI H, 16-bit data. This can be data or this can be address also. ठीक है? So this 16-bit data, what you are passing via program, is getting uploaded in HL register pair. Huh? इसमें भी that thing what I have said before is common. HL register pair में H is the upper, H will hold the upper byte of address, L will hold the lower byte of address. Because HL register pair में H is having the, H is the sorry, H is the higher order register and L is the lower order register. So H will get uploaded with higher order byte and L will get uploaded with lower order byte. हाँ, अभी एक मेरा यहाँ पे एक silly mistake ये हुआ है कि this is not H, this is register pair because it can be applicable to any register pair. I am so sorry.
So actually this is LXI RP comma 16-bit data or address. So RP is register pair. So this is RP higher order, this is RP lower order, RPH RPL. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर पेयर है, इट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, HL, DE या BC. We can have three instructions in this category: LXI H, 16-bit address, LXI D, 16-bit address, LXI B, 16-bit address. So RP is the variable. This is also immediate addressing mode because the data is passed via program. Also I appears in the mnemonics. हेलो मैम। बोलो। मैम एलेक्सा ऑपरेशन से क्या होता है? LXI operation say, I will tell you. So I'm giving you example only. For example, let's say before execution, let's take some other register. BC register pair is having data 0004H. कुछ भी randomly ले रही हूँ, ठीक है? तो BC register pair is having 0004H. इसका मतलब है B में 00 है और C में 04 है. तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ ये, ठीक है? If we give an instruction as LXI B, F300H, then after execution of this instruction, BC register pair will become F300H. उसका data change हो जाएगा. So that data, whatever you are passing, whether it is a 16-bit data or address, will get uploaded into that register pair what you have specified in the operand. So if it is LXI B, that means in BC register pair the address will get uploaded. If it is LXI H, that means in HL register pair the address will get uploaded. And if it is LXI D, that means in D register pair the address will get uploaded. Did you understand what I have said? It means it is the same like a move function, but in this the data gets uploaded in the register pair instead of pair, register हाँ, only. because it is a 16-bit data. Previously अभी Okay, ये जो पहले दो देखे हमने, यहाँ पे वो डेटा 8-bit डेटा था, तो ये 16-bit डेटा है. तो इसके हिसाब से now tell me how many bytes of memory will get consumed. This is how many byte instruction? 3 byte. 3 byte. अभी समझ में आ रहा है? तो 3 byte क्यों है? बिकॉज यहाँ पे अभी एड्रेस जाने वाला है मेमोरी में, तो इसके लिए वो 3 bytes कंज्यूम करेगा. So first byte will be the hex code of that instruction. Next 2 bytes will be the 16-bit data or address which is going to get entered into the program. No flag change. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Then अभी ये होने के बाद अभी जो मैं करने वाली हूँ ये अपोजिट इंस्ट्रक्शन है एक दूसरे के, तो इसके लिए ऐसे दो दो कॉलम्स मैंने बनाए हैं बिकॉज दीज आर ऑल अपोजिट्स ऑफ ईच अदर. सो नेक्स्ट 7th is LDA address. LDA address. तो LDA एड्रेस का मतलब है जो भी तुम्हारा एड्रेस है वो एड्रेस लोकेशन का डेटा will get uploaded into accumulator. LDA address stands for load accumulator with the data content of address specified. Address is nothing but your 16-bit address. ठीक है.
addressing mode will be direct addressing mode because you're specifying the address directly in the program which is to be accessed. These are all data transfer group instructions. And number of bytes required will be how much for this? 3. Again, because there is an address appearing in the operand. So first hex code will be the LDA hex code. Next 2 bytes will be the address of that particular instruction. No flag change will appear. So let's see example of this instruction. For example, let's consider before execution. F200 address is having data 59H and accumulator is having data A4H. Okay, and we give an instruction as LDA F200H. So when we give an instruction as LDA F200H, so after execution, what will accumulator have? Accumulator will get uploaded with the data in the given address. What is the address? F200. What is the data in the given address? 59. So that will get. Did you understand, all of you? Understand. मैम इसके पहले वाला इंसिडेंट दिखाना इसका पहले वाला दिखाओ ना एक सेकंड 6th वाला क्यों? अच्छा मैं दिखाती हूँ ना, ये मैं अपलोड करने वाली हुई है. ओके वो थोड़ा डाउट आ रहा है इसके Okay. Next 8 is opposite of it. STA address. LDA address, STA address एक दूसरे के opposite से. STA address में accumulator content gets loaded into the address location. Okay. This is also direct addressing mode because address is appearing in the operand which you directly need to access. This is also 3-byte operation because address is passing into the program, no flag changes. Let's take same example. F200 is having data 59H. Accumulator is having data A4H. And we give an instruction as STA F200H. So after execution, here exactly opposite will happen. Address F200 content will become A4H. So accumulator content will get copied to the address location. Did you understand? That's why I'm purposely taking common examples so that you can compare and relate and understand the working of those instructions, how they are opposites. Because if you learn like this, then only you will be able to remember nicely. Clear, everyone? मैम ये वाला वापस बताओ ना. कौन सा वाला? ये STA वाला? यस मैम. LDA वाला समझ में आया? यस मैम. LDA में क्या हो रहा है? What is happening in LDA? Accumulator is getting loaded with the address content, है ना? यस मैम. तो address location क्या था? F200. उसका data क्या है? For example, 59. So 59 gets copied to accumulator. In STA address, exactly opposite will happen. What is accumulator content? A4H.
that will get copied to the address location. So address location is F200. So in F200, 59 will get erased, and instead of that, we will have accumulator content, which is A4H. Okay, ma'am, समझा. Next, most important, remember LHLD address and SHLD address. LHLD address and SHLD address. So LHLD address means load HL register directly with the contents of address location. So address location contents will get copied to L register, and address location plus one content will get copied to H register. Okay, so address और उसका next वाला address के data contents gets copied to L and H respectively. This is also direct addressing mode because we are directly specifying the address which is need to be accessed in the operand. इसका function Data LD बताने वाले वाली हूँ, अभी एग्जाम्पल बताऊंगी तो समझ में आएगा. Data transfer group. Number of bytes required will be 3. ठीक है, and no flag changes. Okay. So, for example, before execution, address F200, F201 is having content. Please mute. 43 and 28. Let's see. So these are data contents existing in F200, F201. And HL is having some other data. This is before execution. So if we give an instruction as LHLD F200H, this is the instruction. Then after execution of the instruction, what is going to happen? Let's check out. F200 is having 43. F200 is having 28. So HL register pair, HL register pair is the content of address and address plus 1. So address contents get loaded into L. So 43 goes into L. And address plus 1 content loaded into H. So 28 goes into H. That is what happens after execution. Did all of you understand? So previous data of HL will get erased, and the data what will come is address location data will get copied into L, and address plus 1 will get copied into H. Is this clear? Yes, ma'am. Everyone? So SHLD now is exactly opposite instruction of it. SHLD का मतलब है store HL register data. Store H and L register data to address and address plus 1. Okay. So L content will get copied to address specified, and H content will get copied to address plus 1.
लोकेशन। सो यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट होने वाला है। सो लेट्स टेक सेम एग्जांपल ओनली। फॉर एग्जांपल, बिफोर एग्जीक्यूशन F200, F201 is having data 4328 and HL is having data 1652, and we execute an instruction as SHLD F200H. Store HL register pair directly to the address specified. So L content will go into address location specified. H content will get stored into address plus 1 specified. तो यहाँ पे अभी so now pay attention what happens over here. So L contents will get copied to address specified. So 52 goes into F200H and L content get copied to address plus 1. So 16 goes into address plus 1 means F200 plus 1 is F201H. That is how they are opposites of each other. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. Student, is this clear now? Yes, ma'am, understood. Okay. Then next, the opposite set 11 and 12. 11 is LDAX RP and 12 is STAX RP, STAX RP. LDAX and STAX RP. Okay. So let's see what are they first. First I will explain you because मैं बाकी सब explain करूँगी तो तुम्हें confusion होगा. So let's directly go to the example. तो example से कैसे clear कर समझ में आएगा. तो basically होता क्या है LDAX RP में रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस है उसका कंटेंट, सो इट इज कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर विल गेट कॉपीड टू एक्यूमुलेटर. स्टैक्स में उल्टा होता है, एक्यूमुलेटर कंटेंट विल गेट कॉपीड टू कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर. ठीक है, सो लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल बिफोर एग्जीक्यूशन DE register pair is having address F405H. And this address is having data as 65H. This is the data in the address. Okay, this is the address. And accumulator is, let's say, having content 11H या फिर 14H, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है उससे. So instruction. So here D register I'm drawing. Address उसमें है F405 और उसका कंटेंट जो है डेटा वो है 65. So what is going to happen over here is load accumulator directly with the content of address stored in extended register pair. ये उसका actual meaning है, load accumulator directly with the content of address stored in extended register pair. निमोनिक्स में X आया है यानी कि extended register pair यूज हुआ है. तो अगर मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ LDAX D
उसका मतलब है डीई रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस है, व्हाट इज द एड्रेस इन डी रजिस्टर पेयर F405, उसका डेटा क्या है 65, दैट विल गेट अपलोडेड इनटू accumulator and prior data of accumulator will get erased. Okay, so this is what happens after execution of LDAX. Did you understand, all of you? Students, did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, इसके लिए मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो समझने में कि मेमोरी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एड्रेसिंग मोड इसका क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? Register address. दिस विल बी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें ना ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें एम नहीं है, बट उसका जो पैटर्न है प्रोग्रामिंग का वो इनडायरेक्ट है। जैसे अगर मैं LDAX-D लिखती हूँ तो फर्स्ट आई हैव टू गो टू डी रजिस्टर पेयर टू सी व्हाट इज द एड्रेस। So in the D register pair, I find the address F405. Then I will go to address F405 to find what is the data in it, which is 65. Then 65 will get uploaded into accumulator. So it is an indirect way of programming. That's why even if M is not there in the operand, this is still register indirect addressing, because उसका logical execution वैसा है. It is complete indirect. Did all of you understand addressing mode, why it is register indirect? Yes, ma'am. ठीक है, इसका नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड कितना आएगा, चलो बोलो, मुझे देखना है कौन बताएगा सही आंसर। आई वांट टू सी। 3, ma'am. 3 किस हिसाब से, क्यों 3? Ma'am, 16 bit data होगा। तो तू डेटा लिख रहा है क्या इधर, एड्रेस? आर यू राइटिंग एड्रेस इन द ऑपरेंड? No, ma'am. तू क्या लिख रहा है, रजिस्टर पेयर आया ना तो 1 बाइट ही है, इसके लिए तो इनडायरेक्ट बोला है ना, क्योंकि हम एड्रेस नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम रजिस्टर पेयर का नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं जिसमें एड्रेस स्टोर्ड है, और फिर वो एड्रेस का डेटा हमें एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। That's why it is register indirect addressing mode and 1 byte operation. Did you understand what I've said? मैम वन मोर डाउट है मैम, जिसके बोलो। हर प्रोग्राम जिसके अंदर रजिस्टर पेयर यूज होता है वो रजिस्टर इनडायरेक्ट होएगा ना? नहीं नहीं, LXI register pair is not register indirect, वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, बिकॉज उसमें तुम एड्रेस सिर्फ अपलोड करो रजिस्टर पेयर में। यहाँ पे तुम रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस है उसका डेटा एक्सेस कर रहे हो। ओके मैम, अंडरस्टूड। वो फर्क है दोनों में। तो इसके लिए वो LXI डायरेक्ट भी हो जाता है और इमीडिएट भी होता है, बट ये इनडायरेक्ट होता है बिकॉज इसका जो एड्रेस है उससे हमारा लेना देना नहीं है। एड्रेस का जो डेटा है दैट इज गोइंग टू गेट अपलोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ इनडायरेक्ट प्रोसेस। समझा क्या? हाँ मैम। Stacks RP is exactly opposite of it. Accumulator data will get copied to the address in the register pair. So let's take same example. For example, before execution, D register pair, this is F405. उसमें जो डेटा है वो है 65 फॉर एग्जाम्पल, एंड एक्यूमुलेटर है 14। ठीक है, इफ वी गिव एन इंस्ट्रक्शन एज
If we give an instruction as stax d, then accumulator contents get copied to the data of the address specified in D register pair. So 14 will get copied into address of F405H. Did you understand what I'm saying? Students? Yes, ma'am. TAX RP. Okay. Then coming to last instruction of data transfer. Exchange. XCHG. XCHG stands for exchange. The exchange happens only between exchange between HL and DE. Just a moment, all of you. ओके सो एक्सचेंज बिटवीन HL एंड D. तो ये एक्सचेंज जो रजिस्टर कंटेंट्स का डेटा एक्सचेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ HL और D के बीच में ही होता है. इसके लिए यहाँ पे operand नहीं है. That's why we call this as this is a predetermined operation because it will specifically happen between HL and D, no other register pair. It cannot happen. The exchange cannot happen between HL, BC or BC, DE, but it will happen only and only between HL and DE. So format is H and D contents will get mutually exchanged and L and E contents will get mutually exchanged. So mutual exchange होता है means for example before execution let's consider HL having data 23, 25 and DE having data 63, 65. फिर मैं ये आफ्टर एग्जीक्यूशन का भी निकाल के रखती हूँ. And we give an instruction as exchange. So after execution, this is what is going to happen. So H data will get mutually exchanged with DE. So 63 comes into HL and 23 goes into DE. And L data gets mutually exchanged with E. So E receives 25 and L receives 65. Mutual exchange. So this is mutual exchange. Is this clear to everyone? Students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Addressing mode अभी तुम लोग बोलो मुझे इसका क्या आएगा? What will be the addressing mode? Implied.
Implied? नहीं. The operation is happening between registers, so it will be register addressing mode. Because the operation takes place purely between registers, HL और DE के बीच में. So register addressing mode. Group is data transfer group. Number of bytes require 1 and no flag change. With this, we complete data transfer 13 instructions. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Just a moment. Okay. Starting with next one. Next is arithmetic group. Okay. So second group we are doing now, which is arithmetic group. So arithmetic group में we will be able to see group B, arithmetic operations. Arithmetic means addition and subtraction operations. So starting with arithmetic operations. So first let's see, we are going to perform binary addition. You know all now what is binary addition ना? मुझे वो explain करने का दोबारा जरूरत नहीं है ना? No, Arithmetic group में we will have addition operation and subtraction operation. ठीक है, एडिशन में दो टाइप्स आएंगे, एडिशन विदाउट कैरी आता है एंड एडिशन विद कैरी आता है. वैसे ही सब्ट्रैक्शन विल हैव टू टाइप्स, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरो एंड सब्ट्रैक्शन विद बोरो. ओके, एडिशन में ये जो कैरी है वो तुम्हारा कैरी फ्लैग है, फ्लैग रजिस्टर का. सब्ट्रैक्शन में बोरो जो है वो भी तुम्हारा कैरी फ्लैग ही है. So carry flag plays a very important role. Carry flag becomes carry in arithmetic addition operation. Carry flag becomes a borrow flag in arithmetic subtraction operation. You have to remember that. Okay. Starting with addition operation. So this is basically going to perform binary addition only inside the processor. So what happens is hex values get converted into binary and binary gets performed. So we will see both additions, addition without carry
and addition with carry. ठीक है, अभी एडिशन विदाउट कैरी का मतलब क्या है, एडिशन विद कैरी का मतलब क्या है? तो ये जो कैरी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द कैरी विच कुड हैव जनरेटेड बिफोर दैट एडिशन इज टेकिंग प्लेस। यानी कि कोई भी एडिशन होने के पहले अगर कहाँ पे कोई पोजीशन में कैरी जनरेट हुआ है in the program, then that gets also considered in the addition. हाँ, so I'm taking an example. Let's consider अभी addition है तो one of the data has to be in accumulator, that is compulsory. Okay, अगर तुम add कर रहे हो numbers को तो one of the data has to be in accumulator. Second data you can put it in any one of the register. It can be either register B, C, D, E, H, L, कोई भी हो सकता है, ठीक है? So let's take data as FBH and register B as C8H. Similar दिख रहा है ना? I will take something else. F4H and C8H. Let's say. हाँ, तो एडिशन विदाउट कैरी का मतलब है कि हम कैरी कंसिडर नहीं कर रहे जो इसके ये इंस्ट्रक्शन देने के पहले जनरेट हुआ रहेगा इन द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है? तो अगर मैं सिर्फ प्लेन एड बी लिख रही हूँ तो इट इज जस्ट प्लेन एडिशन ऑफ बी to accumulator and saving the result in accumulator. This is done without carry. ठीक है? So now let's proceed. So now we convert this value into binary. F is 1 1 1 1, 4 is 0 1 0 0, and C is 1 1 0 0, 8 is 1 0 0 0. Add them. No previous carry is considered. So I will start from here. LSB bit 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 0, carry 1, 1 plus 1 plus 1, sum is 1 and a final carry. ठीक है? So answer in accumulator will become, what is 1 0 1 1? B. And what is 1 1 0 0? C, with a final carry generated. Now arithmetic operations में whether it is subtraction or addition, दोनों में सब flag changes होते हैं. All flags will change. Okay. So now let's see how it affects the flag register. हेलो मैम। बोलो। मैम वो जो a प्लस बी जो है उसके अंदर हम लोग एक्यूमुलेटर में जो प्रीवियस वैल्यू है उसको b से प्लस कर रहे हैं ना? यस। तो ये जो वैल्यू आया है ये आफ्टर एग्जीक्यूशन है ऑफ एडिशन इंस्ट्रक्शन BCH. ठीक है? So now let's check out the flag sentence values. No carry flag, final carry generate हुआ, इसके लिए carry flag set होगा 1 ना, ये वाला. This comes here, final carry. बराबर ना? समझा ना सबको? Yes, ma'am. Parity. Parity flag. How many number of ones you are having? 1, 2, 3, 4, 5. In the accumulator answer, कितने number of ones है? 5. 5 is what? An odd number. So parity is what? 0.
समझा ना? Parity will be 0 because we have odd number of ones in the answer achieved. ठीक है? Auxiliary carry क्या आएगा? Auxiliary carry क्या आएगा? What will be auxiliary carry? Is there any auxiliary carry generated here from third bit to fourth bit? यहाँ पे generate हुआ है auxiliary carry? No. No, na? It was 0 only, na? No auxiliary carry generated. So AC is 0 because this is the position for your AC auxiliary carry. ठीक है? Z flag. तुम्हें जो आंसर मिला है वो नॉन जीरो आंसर है. ये जो एक्यूमुलेटर का आंसर है ये क्या है? ये नॉन जीरो आंसर है ना? यस तो मैम. Z flag will be 0 और MSB बिट क्या है? 1 है. तो S flag is 1. साइन फ्लैग. हालांकि हम अनसाइंड नंबर्स यूज कर रहे हैं. साइन फ्लैग विल बी रिफ्लेक्टेड व्हेन यू यूज साइंड नंबर्स. साइंड नंबर्स में जब ये S flag 1 होता है तो आंसर नेगेटिव होता है. बट ये आंसर नेगेटिव नहीं है. हम अभी अनसाइंड नंबर्स की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टेकिंग राइट नाउ करंटली साइंड नंबर्स. तो जब भी साइंड नंबर्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, अनसाइंड नंबर्स यूज कर रहे हैं, देन इन दैट केस व्हेनेवर द data processed MSB bit is 1, okay, most significant bit is 1, that time S flag will be 1. These all others will be don't care conditions. तो वहां पे डेटा कुछ भी हो सकता है. So this will be the flag changes after the execution. समझा क्या? Students, ma'am. am I clear? अभी एडिशन विथ कैरी देखते हैं, उसका मतलब क्या है. तो मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ ताकि तुम्हें कंपैरिजन में समझ में आए. लेट्स से A is F4H and B is C8H and carry flag is set as 1 before we execute this add instruction. Let's say carry is 1 because of some previous operation. तो कोई previous operation की वजह से carry set हुआ है 1. ये 0 भी हो सकता था if you are performing addition with carry operation. तो अगर मैं लिख रही हूँ इंस्ट्रक्शन ADCB, इसका मतलब है add register B to accumulator. Add register B to accumulator along with carry and store the result in accumulator. This is the only difference between add without carry and with carry. Without carry का मतलब है previous carry अगर generate हुआ है, if probability होता है हमेशा, if it is generated, it won't be considered. एडिशन विथ कैरी में प्रीवियस कैरी जनरेट हुआ है नहीं जनरेट हुआ है वो कंसिडर होगा. तो अगर ये कैरी 0 है यहाँ पे तो हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, आंसर वैसे का वैसे ही रहेगा. बट कैरी 1 होने की वजह से लेट्स सी व्हाट इज द चेंज व्हाट वी गेट. सो F4 एंड C8 और कैरी 1 है, ये ऐड करो. ठीक है, तो 1 0 1 1 1 1 1 plus 1 0 carry 1 1 and a final carry. So the answer what we get is final carry आता है तो वो यहाँ पे चला जाता है. See the number of ones. Number of ones are 1 2 3 4 5 6. 6 है. So even parity. So we have even number of ones. Auxiliary carry generate हुआ यहाँ से यहाँ पे. No. AC is 0. Z flag is 0 because it is a non-zero answer. यहाँ पे MSB bit 1 है तो S flag 1. So these are the flag changes what happens. This is don't care condition. Did you understand all of you? Yes ma'am. मैम तो इससे खाली अपना पैरिटी चेंज होएगा ना बस, और कुछ चेंज होने का चांस नहीं है ना, बाकी सब सेम रहेगा. That is because मैंने डेटा वही लिया है करके.
Yes, ma'am. डेटा के हिसाब से वो सब वैल्यूज आते हैं, तो वैसे ही रहेंगे ऐसा नहीं है, तुम्हें उनका लॉजिकल मतलब याद रखना है। अगर डेटा चेंज हो जाता है तो उनका वैल्यूज भी चेंज हो सकता है, 0 1 सेट रीसेट हो सकते हैं, तो लॉजिकली याद रखो वो चीज। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So Yes, ma'am, understood. with that we have 3 addition operations without carry and 3 addition operations with carry. Huh? So first we are seeing addition without carry operations. So in that we have 3 categories, 3 instructions. First instruction is add R. So in add R, accumulator contents will get added to register specified and result is stored in accumulator. This R can be any one of A, B, C, D, E, H, L, कोई भी एक हो सकता है। तुम add A भी लिख सकते हो, तो add A में A contents will get added to a result is stored in A. ठीक है? Addressing mode is register addressing mode because the addition is happening between registers. Group is arithmetic group. So these are all arithmetic group instructions. ठीक है? Number of bytes required will be 1 because in the operand we have a register name. It's not a data or an address. And all flags will change. ठीक है? So now let's take the example what we've taken prior only. So for example, before execution, let's say accumulator is F4, B is C8. Accumulator is F4H, register B is C8H, and we give an instruction as add B. So after execution, what we are going to get is accumulator will be, what is accumulator? BC. ठीक है? And flag register will be what we have got. The same way. So here we have got the flag as 10001. So 10001. Exactly same. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Second instruction in this category is same. It's just the operand is now going to change. First it is add R. Now it will be add M. So here the content of HL is getting added to accumulator. And result is saved in accumulator. This is register indirect addressing mode because operand may we have M, so indirect way of addressing. 1 byte operations, all flag will change. So let's take same example. So let's consider before execution, accumulator is having F4H and HL register pair is having address F200H. Address F200H is having content, we will take the same C8H. Okay? And we give an instruction as add M. So memory pointer content. What is memory pointer content? Memory pointer content is C8H. Because memory pointer is that data whose address is in HL. So HL में address है F200. F200 content is C8. That is going to get added to accumulator. Okay.
So we will have the same result after execution. Accumulator will be BCH and flag changes are same. समझा ना? मैं वापस ड्रॉ नहीं कर रही बिकॉज मैं एक ही एग्जाम्पल के साथ तुम्हें ऑपरेशंस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे कैसे ऑपरेशन चेंज होंगे. एडिशन वैल्यू सेम रहेगा बिकॉज मैंने डेटा सेम लिया हुआ है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, ma'am. इसमें थर्ड टाइप मैम आएगा. बोलो. मैम एग्जाम में हम लोग को कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, मतलब कैसे टाइप में आएंगे? बताऊंगी. तुम जो मैंने अभी दिया है वो पढ़ो. तुम्हें ओके पढ़ना क्या है, यानी कि ये पढ़ना है जो मैं लिख रही हूँ ना, ये तुम्हें पढ़ना है करके उसके हिसाब से मैं लिख रही हूँ. तो इसके ऊपर काफी सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शंस भी आ सकता है. देन तुम्हें कुछ डेटा दिया जाएगा registers में, and then you have to tell that after execution of so and so instruction what are the changes in the registers. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. तो बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगी. या फिर recognize what are the addressing modes of following instructions. Recognize which of the instructions are 1 byte, 2 byte, 3 byte. ऐसे भी आ सकता है. Explain any instruction बोलो तो तुम्हें ये all 6 पॉइंट याद होने चाहिए. Format, addressing, group, bytes, flag and explanation. That is example. Next instruction is ADI 8-bit data. So here the data what you are sending via program is getting added to accumulator and result is saved in accumulator. This is immediate addressing mode. Mnemonics में आया है. Arithmetic group, number of bytes required. How many bytes will be required for this instruction? How many bytes? 1 2 byte. 2, because in operand we have a 8-bit data which is passing, and here also all flag changes. For example, before execution, accumulator is having F4H and we give an instruction as ADI C8H. So data what you are passing via program C8H will get added to accumulator content. So after execution, accumulator will remain same BCH and flag changes also are same. Is this clear to all of you? Yes, ma'am. We have lecture at 11:25, ma'am. Next. 11:35. 11:25 till 6 p.m. 11:25. Until- ठीक है, चलो समझा मुझे. तो ये 3 इंस्ट्रक्शन तुम्हें समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. So I will stop here. Addition without carry अभी कल से करूँगी. Okay, just a moment. Thank you, ma'am. मैम ये आज अपलोड कर दोगे ना?